Yeah, okay. So basically last class में this is where we ended. पहले तो हमने एक जनरल रूल सीखा था, वो ये कि if x is in the second term, we figured कि r will be the required power of x. ठीक है. So आज का हमारा concept है कि we're going to see what if x is in the first term. ठीक है. अच्छा, तो हम एक काम करते हैं. Let's say we are asked to expand x minus 2. In fact, let's say 2x minus 1 थोड़ा आसान हो जाएगा. The whole thing to the power 9. Let's say we want to find the first 4 terms. ठीक है. In fact, 4, let's make it 5. Okay. So that means we're going to start from r equals to 0. So 9c0, 2x raised to the power 9 minus 1 raised to the power 0. And then 9c1, 2x to the power 8 minus 1 raised to the power 1. 9c2, 2x to the power 7 minus 1 to the power 2. 9c3, 2x to the power 6 minus 1 to the power 3. And then 9c4, 2x to the power 5 and minus 1 to the power 4. Okay. So what we have done so far is we have figured out the first 5 terms. Okay. और को हमने 1 रखा, और को हमने 2 रखा, और को हमने 3 रखा, और को हमने 4 रखा. Okay, now let's write down all these terms one by one. So 2 to the power 9 is 512, so we're looking at 512. Now let's see, 9c1 into 2 to the power 8, sorry, 512 x to the power 9. Yeah, so 9c1, 2 to the power 8, so we're looking at 2304 minus 2304 x to the power 8. ठीक है, 9c2 into 2 raised to the power of 7. So now we're looking at 4608 x to the power 7. फिर आ गया 9c3 into 2 to the power 6. So now we're looking at minus 5376 x to the power 6. Now we're looking at 9c4 into 32. So we're looking at 4032 x to the power 5. So yeah, achha. So let's write this nicely and see if we can find a pattern here. 2x minus 1 to the power 9 is equal to 512 x to the power 9 minus 2304 x to the power 8 plus 4608 x to the power 7 minus 5376 x to the power 6 plus 4032 x to the power 5. ठीक है. अब यहाँ पे पैटर्न क्या है? यहाँ पे पैटर्न ये है. Now this is a pattern that I don't know if you guys will be able to point out. लेकिन जब हमारे पास r पे power 1 है, sorry, r पे power नहीं, sorry, when r is equals to 1, we end up getting the coefficient of x to the power 8. When r is equals to 2, we end up getting the coefficient of x to the power 7. When r is equals to 3, we end up getting the coefficient of x to the power 6. And when r is equals to 4, we end up getting the coefficient of x to the power 5. So can you guys identify a pattern here? So it's 9 minus the value of r to get the coefficient. Yes, absolutely. So basically यहाँ पे जो तरीका है वो ये है कि if x is in the second term, so yeah, the value of r is n minus the required power of x. ठीक है, if x is in the second term, the value of r is n minus the required power of x. ठीक है, that's how it works. Let's see. अगर हमें चाहिए x power 8, so हम r क्या रखेंगे? हम r रखेंगे 9 minus 8. ठीक है, which is equal to 1. If I want x power 7, तो हम r क्या रखेंगे? हम r रखेंगे 9 minus 7, which means it's equal to 2. अगर हमें चाहिए x to the power 6, तो हम r क्या रखेंगे? 9 minus 6, which is equal to 3. अच्छा, अब एक काम करते हैं. Let's say it's the same expansion, 2x minus 1, the whole thing to the power 9. And let's say मुझे चाहिए the coefficient of x cube. Let's say I want the coefficient of x cube. तो अब suggest करें कि r क्या रखा जाए? 9 minus 6. 9 minus 3, which is equal to 6. ठीक है, now let's see. जब आप r6 रखो,
Yeah. So could you please explain this line again? I just didn't get it. Sure. ये वाला sir part. देखो. So basically, were you there in the last class? जी sir. हाँ. So last class में things were pretty straightforward कि जो x की अगर x second term में था तो जो आपको x चाहिए था वही जो x की पावर चाहिए थी वही r की वैल्यू थी. ठीक है. If you wanted 3x cube तो आपने r की जगह रखा 3. If you wanted the coefficient of x power 6 तो आपने r की जगह रखा 6. So on and so forth. अब यहाँ पे things are different. यहाँ पे if you want the coefficient of x cube, so what is the required power of x? The required power of x is 3. The way to do this is to find n. N is the power that's given on the binomial, and subtract the required power of x from n. So that means 9 में से हमने 3 minus किया, so we've ended up with 6. So that means हम r की जगह 6 रखेंगे. ठीक है? To get the coefficient of x cube. Now let's plug in 6 and see if it actually works. ठीक है? अगर अभी भी नहीं समझ आया, so just hang on. अभी थोड़ी देर में clear हो जाएगा. So 9c6 अगर मैं रखता हूँ, so 9c6 a which is 2x, उस पे मैं रखूंगा 9 minus 6 which means 3, b which is minus 1, उस पे मैं रखूंगा 6. So let's see what I end up with. So I end up with 9c6 into 2 to the power 3, so ये आ गया 672. So I end up with 672 x cube. And you can tell कि जब 672 जब 2x whole cube होगा तो you will end up with x cube. So the final answer will just be 672. अच्छा, अभी भी अगर नहीं समझ आया, nothing to worry about. Let's do another example. Suppose you're asked to find the coefficient of x square. तो अब r हम कैसे रखेंगे, कैसे decide करेंगे? We'll take n which is 9 and from it we'll subtract the required power of x which is 2. That means r बराबर आ गया 9 minus 2 which is equal to 7. So let's see what we end up with. We end up with 9c7 2x to the power 2 minus 1 to the power 7. So 9c7, let's work that out. 9c7 is 36. 36 into 2 का square, that's 144. लेकिन minus में होगा because minus 1 पे power 7. And our final answer is now minus 144. ठीक है, so long story short, if x is in the second term, the value of r is always n minus the required power of x. अब मुझे बताओ समझ आया? Yes, sir. आ गया. Okay, great. अच्छा, let's do some questions. ठीक है. Before we do some questions, let's say कि चलो एक और example करते हैं. ठीक है. अब let's say the first question is expand करें 1 plus 2x, the whole thing to the power 9, up until the term in x cube. ठीक है, कैसे करेंगे इसको? Let's see. And let's say कि हमारे question का part A है because there's a part B which is coming. So here's how we'll do it. We'll do 9c0, 1 to the power 9, 2x to the power 0. Then we'll do 9c1, 1 to the power 8, 2x to the power 1. We'll do 9c2, 1 to the power 7, 2x to the power 2. We'll do 9c3, 1 to the power 6, 2x to the power 3. So yeah. ये 1 आ गया. So yeah, 9 into 2, 18x आ गया. So 9c2, let's see what is that. 9c2 into 4. So that's 144 x square. 9c3 into 8. So that's 672 x cube. Okay, what do we end up with? We end up with 1 plus 2x, the whole thing power 9 is equals to 1 plus 18x plus 144 x square plus 672 x cube. ठीक है, ये आ गई इसकी expansion. अब let's say there's a part B जिसमें है आपके पास 3x minus 2 multiplied by 1 plus 2x to the power 9, and the question is asking you, okay, the question is asking you to find the coefficient of x cube in the expansion of. अच्छा, अभी don't just dive straight into expanding these brackets. पहले जरा हम इसको अच्छे से study करते हैं, ठीक है ना?
Let's see what we're given. Let's see what we're asked to find. So it says find the coefficient of x cube in the expansion of 3x minus 2, 1 plus 2x to the power 9. Now, as far as 1 plus 2x to the power 9 goes, this is something we just expanded, although we didn't expand it entirely, but we figured out the first 4 terms up until x cube. So what I'm going to do is, सबसे पहले तो मैं इसको इससे replace कर दूंगा. 3x minus 2 with 1 plus 18x plus 144x square plus 672x cube. ठीक है, और फिर प्लस के बाद डॉट 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 होगा. ठीक है. अच्छा, अब क्या सीन है? अब वन वे टू डू दिस वुड बी कि हम सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें एंड देन जस्ट फाइंड आउट व्हाट द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज. ठीक है, बट ये एक बहुत ही फारी वाला तरीका, तो बहुत ही एक फारी वाला काम है. ठीक है, we're going to try and find an easy way out. ठीक है, if there is, although sometimes there isn't, but let's see if there's an easy way out. Now we know that we want just the coefficient of x cube and nothing else. सही है. So अब मुझे एक बात बताएं आप लोग, 3x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं so that I end up with x cube? Do I need to multiply by 144x square? Yes, so that means I just need to multiply 3x with 144x square. Why? Because x and x square will make x cube. So let's do that. Let's see what 3 into 144 is. So I'm looking at 432x cube. सही है. अच्छा, अब let's see कि और भी कोई ऐसा combination of terms है जो मैं multiply करके x cube बना सकता हूँ. What do you guys think? You have a 2 here, which is a constant. Minus 2 into 672x cube. Very good. So I can take minus 2 multiplied by 672 because minus 2 एक constant है, उसको मैं किसी भी x की power से multiply कर दूं, the power of x will remain the same. So minus 2 into 672 करते हैं. Minus 2 into 672. So what we're looking at is minus 1344 x to the power 3. ठीक है? So 432 minus 1344 is equals to minus 912 x cubed. So the final answer is minus 912. So also 672x cube minus 3x. नहीं, अगर 672x क्यूब को मैं 3x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे बताओ x की क्या पावर हो जाएगी? ये माइनस नहीं कर सकते. अच्छा, मल्टीप्लाई हो. ये ब्रैकेट का मतलब है माइनस. ओह सॉरी, ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब माइनस नहीं. Okay. ठीक है, get it? So Yes. we always have to subtract, जिस तरह like fourth हम हर केस में subtract ही करेंगे. आपने जिस तरह अभी इधर subtract नहीं, डिपेंड्स कि आपको ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, डिपेंड्स कि आपकी टर्म्स के क्या साइन है. जैसे फॉर एग्जांपल what if this was 3x plus 2, तो पॉजिटिव 2 मल्टीप्लाई होता है. ये माइनस इसकी वजह से नहीं है कि हमारा एक स्टैंडर्ड रूल है कि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. ये माइनस इसकी वजह से है, minus 2 multiplied by 672. alright. Get it? Or what if there was a minus here? Although ये fourth term है, there either minus हो नहीं सकता था, but let's say there was 1 2 3. हाँ, this is the fourth term, तो यहाँ minus नहीं हो सकता था. But what if there was? तो in that case हमारे पास यहाँ पे बल्कि wait, R0 1 2 3. हाँ, इधर minus ही होता है. In fact यहाँ पे minus होता है और 672 भी होता minus 672x cube, और अगर minus होता तो minus minus ultimately plus हो जाता. ठीक है. So there is no standard rule कि हमने plus करना है हमेशा या minus करना है. That always depends on the sign that you have with the value. Okay. अच्छा, अभी तक तो things were pretty straightforward. Now there is going to come a point where Sir, जी बोलें. sir, can you explain this question one more time, please? Yeah, sure. देखो, काम करते हैं. Let's just do it one more time. So basically आपके पास 3x minus 2 एक एक्सप्रेशन है जो मल्टीप्लायर है 1 plus 2x to the power 9 से, जिसकी एक्सपेंशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है. अच्छा, इसकी एक्सपेंशन हमने करके क्या निकाली? इसकी एक्सपेंशन हमने करके निकाली 1 plus 18x plus 144x square plus 672x cube. ठीक है. अच्छा, you also have to be one step ahead of the question. ठीक है, I'll tell you how. You know कि ultimately आपने coefficient of x cube देना है. सही है. So now there may come a point where you have to find, expand करने के बाद भी you may have to find an extra term of the previous expansion. ठीक है. Although that's not the case over here. क्यों? क्योंकि यहाँ पे x है, x को हम किससे मल्टीप्लाई करें so that we end up with x cube? खुदा X square. So do we already have the term in x 144x square? square. We do. So हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 144 से. ठीक है. क्या आया था? 144 times 3 432 आया. So we ended up with 432 positive x cube. अब हमारे पास है -2. इसको हम बोलते हैं constant बोलेंगे इसको या independent of x बोलेंगे. ठीक है. There are two names for
द सेम थिंग। इसको किससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? व्हाट शुड आई मल्टीप्लाई दिस विद? 672 x cube. तो ये क्या हो जाएगा? लेट्स सी, Minus 1344 x cube. -1344. So let's see what we end up with. We end up with 432 minus 134. Minus 912. 912. Okay, I get it. Thank you, sir. Okay. अच्छा, अब there will come a point के you will have x in both the terms. ठीक है, I'll tell you what I mean. अब देखो, अभी जो हमारा पूरा सब कुछ चल रहा है वो चल रहा है क्या? वो चल रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ x निकालने के क्या क्या डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। ठीक है, तरीका तो डिफरेंट है वो इसलिए कि बिकॉज इन वन केस वी हैव x in the first term, in one case we have x in the second term. Now what we're going to do is what happens when you have x in both the terms. ठीक है, what happens कि अगर आपके पास x जो है वो पहली टर्म में भी है और दूसरी टर्म में भी है. So let's have an example for that. Let's just looking for an example here. So let's say you are given, yeah, अच्छा ये है, ठीक है, और सवाल आपसे कह रहा है कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. ठीक है, अच्छा अभी इसको स्टार्ट ना कीजिएगा. कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x minus 2 upon x the whole thing to the power 4. Okay, now अब जब भी हमारे पास हो x in both the terms just like we have over here, तो उसके लिए ना हमारा फर्स्ट वाला रूल काम करता है ना हमारा सेकंड वाला रूल काम करता है. फर्स्ट वाला रूल क्या था कि जब x सेकंड टर्म में हो तो, और फर्स्ट वाला रूल क्या था जब x फर्स्ट टर्म में हो. क्यों नहीं काम करता? बिकॉज वी कैन सी कि यहाँ पे x ना फर्स्ट टर्म में ना सेकंड टर्म में, बल्कि मतलब फर्स्ट टर्म में भी है और सेकंड टर्म में भी है, दोनों टर्म्स में. तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए वी गो बैक टू आवर फॉर्मूला which was NCR a raised to the power n minus r and b raised to the power of r. क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव is to find just the right value of r that we can plug in this formula which will give us the coefficient of x square. ठीक है, now let's see how we can do that. So r को हम r ही रहने देंगे और हम ये फॉर्मूला में n a और b प्लग इन कर देंगे. So that means n जो कि 4 है, c as it is, r we don't know, so we'll just let that be as it is. a बराबर है 3x के, 3x पे हम पावर लगा देंगे 4 माइनस r. b जो कि बराबर है -2 अपॉन x के, उस पे हम पावर लगा देंगे r. और इसको इक्वल कर देंगे किसके? इसको इक्वल कर देंगे x स्क्वायर के. ठीक है, क्यों हमने इसको इक्वल किया x स्क्वायर के? बिकॉज वी वांटेड द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. अच्छा, अब क्या करेंगे हम? अब हम ये करेंगे कि हम थोड़ी देर के लिए we'll just completely ignore all the constants. Okay, what do I mean? I mean whatever constant that you have over here, whatever something that does not have x in it, we're just going to ignore it. So that means I'm going to ignore 4cr completely for now. I'm going to ignore this 3 that we have for now. So yeah, and I'm going to ignore this -2 that we have for now. Okay, and I'm just going to focus on everything that has x in it. So that means I'm looking at x raised to the power of 4 minus r, 1 upon x, क्योंकि मैंने 2 को इग्नोर कर दिया ना, raised to the power of r is equals to x square. अच्छा, अब ये मैं इसको बहुत इलैबोरेट करके कर रहा हूँ बिकॉज इट्स द फर्स्ट एग्जांपल, एंड द सेकंड थर्ड एग्जांपल विल नॉट डू इट सो एक्सटेंसिवली, क्योंकि ताकि आपको कहीं ऐसा ना लग रहा हो कि तो इतनी ज़्यादा वर्किंग है फॉर सच फ्यू मार्क्स. नाउ लेट्स गो, लेट्स रिकॉल ओ लेवल इंडिसेस एंड सर्ट्स. अगर x हमारा डिनोमिनेटर में है और हम इसको न्यूमरेटर में लेकर आना चाहते हैं, सो क्या होगा? व्हाट्स गोना हैपन एज अ रिजल्ट? -x. नहीं, x नहीं माइनस होगा, x पे जो पावर है वो माइनस हो जाएगी. So you have x raised to the power 4 minus r as it is. x पे जो पावर है ना, देखो, what if you have 1 upon x square और आप इसको न्यूमरेटर में लेकर आओगे तो x पावर -2 होगा. Yes. So ये हो जाएगा x to the power -1 raised to the power of r is equals to x square. Now what are we looking at? We're looking at x to the power 4 minus r multiplied by x to the power minus r is equals to x square. जब सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स क्या होती हैं? ऐड हो जाएंगी. सो ये हो जाएगा 4 माइनस r प्लस -2r, वो आगे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाए, वो हमारा मसला नहीं है क्योंकि वो अपना साइन ऑलरेडी उसका नेगेटिव है. इग्नोर
4 minus 2r is equals to 2. हम क्या कर रहे हैं, पावर्स को कंपेयर करें. If you remember 2 power x equals to 8 को कैसे सॉल्व करते थे, 2 power x को ऐसे ही रहने देते थे और 8 को रीराइट करते थे as a power of 2, and then we would ignore the bases because they're the same and just compare the powers, या equate the powers. So 2 is equals to 2r, which means r is equals to 2 upon 2, which means r is equals to 1. अब यहाँ पे आपकी कहानी खत्म नहीं हुई. यहाँ पे we have just figured out the value of r. You know, we were looking for the value of r that we can plug in the formula that will give us the coefficient of x square. Now we're going to take this value of r and plug in this formula with the rest of the values. Okay, this time we're not going to ignore the constants. So that means I'm looking at 4c1, 3x raised to the power 4 minus 1, which is 3, and minus 2 upon x raised to the power 1. Now, if I do this right, my x should simplify to x square, if this is the correct value of r. Let's see if that happens or not. 4c1 is 4. 3x whole cube is going to be 27x cube into minus 2, the whole thing upon x. Now let's see what we're looking at. 4 into 27 into minus 2. चलो ये तो आ गया हमारे पास minus 216. अब x cube upon x simplify होके क्या हो जाएगा जरा बताओ? x square. X square, and that is exactly what was supposed to happen because हमारी r की value 1 जो आई थी वो आई थी to figure out the coefficient of x square, and that's what we went up with. So अब हो सकता है आप में से कुछ लोगों को समझ आ गया, हो सकता है किसी को ना आया. अगर that's the case, nothing to worry about, just bear with me. I'm going to do Sir, some. I just didn't fully understand the way that we got x to the power, the way that we got all that written in blue from the red. ठीक है. Yes, didn't sir. understand I that. know it's a new concept, it's going to take a while. ठीक है, nothing to worry about. काम करते हैं, let's do more examples. ठीक है, you will get the hang of it. Okay, so I'm going to do at least 2 to 3 more examples. Right? Okay, now let's say the question is x minus 3 upon x to the power 5, and your job is to find the coefficient of x cube. ठीक है, क्या करना है आपने आपने निकालना है the coefficient of x cube. अच्छा, अब देखते हैं coefficient of x cube कैसे निकलेगा. पहले देखने दो मुझे coefficient of x cube possible है. हाँ बिल्कुल है possible. सही. Now here's what we're going to do. R चाहिए ना हमें. R कैसे आएगा? We're going to use this formula NCR, a raised to the power n minus r, b raised to the power r. ठीक है, वही formula जो हम हमेशा यूज करते चले आ रहे हैं. और हम इसमें r को r ही छोड़ देंगे. n a b जिनकी वैल्यूज हमें पता है वो हम प्लग इन कर देंगे. That means I'm looking at 5cr x raised to the power 5 minus r minus 3 upon x raised to the power of r, और मैं इसको इक्वल करूंगा किसके? इसको मैं इक्वल करूंगा x क्यूब के. ठीक है, I'm going to set this equal to x क्यूब. अच्छा, उसके बाद I'm going to ignore 5cr for the time being. I'm going to ignore minus 3 for the time being. So yeah, because they're constants. I don't want anything that has nothing to do with x. I want everything that has to do with x. Okay. So x to the power 5 minus r into x raised to the power minus 1, this पे है power r is equals to x to the power 3. ठीक है. Let's see कि ये मुझे कहाँ लेके जाता है. X to the power 5 minus r is equals to x to the power 3. Base को कर दो ignore. Now we're looking at 5 minus 2r is equals to 3. So yeah, which means 2r is equals to 5 minus 3, which is also 2. That means r is equals to 1. ठीक है, अब ये coincidence है कि यहाँ पे भी r1 है, ऊपर भी r1 है, so don't make it general rule. Yeah. Could you explain what happened to 5cr and minus 3 once more, please? देखो, basically हमें चाहिए x की पावर 3. सो हमने क्या किया, हमने लेफ्ट साइड पे जितनी भी x की पावर्स हैं हमने सिर्फ उन पे फोकस किया. ठीक है, 5cr is not a power of x and has nothing to do with x. It's just the coefficient of x. ठीक है, which is something we're interested in right now, but you know what we are more interested in कि r की वो वैल्यू जिससे हमारे पास x पे पावर 3 है. ठीक है, so 5cr को हमने इग्नोर किया because it is not the power of x. x to the power 5 minus r को हमने, ठीक है, we took that into consideration. minus 3 को हमने इग्नोर किया because it is also not the power of x. We took this x, brought it in the numerator. तो x की क्या पावर हो गई? x की पावर हो गई -1, r से मल्टीप्लाई करके हो गई -r. ठीक है, और हमने इसको इक्वल कर दिया x पावर 3 के. देखो बैकग्राउंड में हो क्या रहा है, बैकग्राउंड में ये हो रहा है कि हम लेफ्ट साइड पे जितनी भी x की पावर्स हैं हम उसको x क्यूब के इक्वल कर रहे हैं. और ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है ताकि हमारे पास r की वैल्यू आ जाए.
फिर हमारे पास जब r की वैल्यू आ जाएगी उसको हम वापस इस फॉर्मूला में प्लग इन कर देंगे. Let's see what happens if I do that. If I plug in r as 1 in the formula, so I'm looking at 5c1 x raised to the power 5 minus 1, which is 4, minus 3 upon x raised to the power of 1. Okay, so what am I looking at? I'm looking at 5 into x to the power 4 into minus 3 upon x. Okay, so ये बन गया हमारा minus 15 x cube, which means the final answer is minus 15. और देखो हमारे पास क्या आया, हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब भी आया. ठीक है, वन वे टू चेक वेदर आपने r की वैल्यू सही निकाली या नहीं इज वंस यू प्लग्ड इट इन, चेक करो कि क्या आपकी कोएफिशिएंट जो आ रहा है एंड में वो क्या वही कोएफिशिएंट है जिसके इक्वल रख के या जिस पावर के इक्वल रख के आपने r की वैल्यू निकाली. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने x पावर 3 के इक्वल रख के r की वैल्यू निकाली, तो एंड में am I really getting x पावर 3? If yes, that means you've done it correctly. Now again, Okay, sir, understood. if it is still shaky, if it's still not 10 on 10, don't worry. Let's do one more example. Okay. So let's say you have x squared plus 1 upon 2x to the power 5. ठीक है, इसमें आपको चाहिए find the term independent of x. ठीक है, क्या चाहिए आपको? You want the term that's independent of x. अच्छा, वो term जो independent of x होती है उसमें x की क्या पावर होती है? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 है, 1 is independent of x, right? So what's the power on 1 that we have? 0. 0. Yes. Whenever the question is asking you to find the term that's independent of x, that means x पे जो power होगी वो होगी 0. सही है? So क्या मकसद है? असल मकसद है r की वैल्यू फाइंड आउट करना. So r की वैल्यू कैसे आएगी? 5c r x square raised to the power 5 minus r 1 upon 2x raised to the power r equals to क्या करूंगा मैं? Equals to करूंगा x to the power 0, because that's what the term independent of x really means. ठीक है, याद रखना independent of x का मतलब x to the power 0. अच्छा, फिर 5cr को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देंगे हम, इस 2 को थोड़ी देर के लिए हम, in fact let me use a different color so you guys can distinguish. 5cr को इग्नोर कर दिया, इस 2 को इग्नोर कर दिया. ठीक है, टेक्निकली तो हम 1 को भी इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि जब हम x को ऊपर ले जाएंगे so we've kind of forgotten about the 1 also. So x to the power, अब मुझे बताओ जब ये 2 और 5 2x square to the power 5 minus r, so x की जो फाइनल पावर होगी वो क्या बनेगी? X power 10 minus 2r. Very good, it's going to be x power 10 minus 2r. ठीक है, so I'm looking at x to the power 10 minus 2r. सही है, multiplied by, अब जब x ऊपर आएगा तो x power minus 1, जब वो r से multiply होगा so that means x power सीधा सीधा minus r हो जाएगा, equals to x to the power 0. Now let's see what I'm looking at. X to the power, wait a minute, 2 minus 3r. Wait, find the term independent of x. Oh, sorry. 10 minus r. I copied the question wrong. It was actually x square plus 1 upon 2x to the power 3. क्योंकि ये तो possible ही नहीं है. Sorry, my bad. I'll just fix it. सर हम 5 के साथ भी कर लेते. नहीं कर सकते थे क्योंकि वो डेसिमल में आ रहा है, डेसिमल में नहीं आना चाहिए यार. Okay. वही तो देखो ना, 10 minus 2r, 10 minus 3r equals to 0. So that's something that's wrong. Anyway, so अब ये हो जाएगी x to the power 6 minus 2r into x to the power minus r is equals to x to the power 0. हाँ अब सही है. So ये हो गया आपका x to the power 6 minus 3r is equals to x to the power 0. So we're looking at 6 minus 3r equals to 0. 3r equals to 6. R is equals to 6 upon 3, which is equal to 2. Okay, now that we have the value of r, let's plug it in here and see what we end up with. So we end up with 3c2 x square raised to the power of 3 minus 2, so that means just 1, and then 1 upon 2x raised to the power 2. सही है. अब अगर हमने सब कुछ सही सही किया, हमारे पास एंड में क्या बचना चाहिए? हमारे पास एंड में x नहीं बचना चाहिए. ठीक है, so 3c2 होता है आपका 3 into 2 is 6, 6 upon 2 is 3. ठीक है, 3 into x square upon 1 upon 2x whole square क्या होगा जरा बताओ? 1 upon 4x square. Yes, 1 upon 4x square. So that means सीधा सीधा upon 4x square होगा. X square and x square gets cancelled out. Is this the coincidence or is this what was supposed to happen?
what was supposed to happen. This is what was supposed to happen. And what is the term that's independent of x? The term that's independent of x is 3/4. अब बताएं मुझे समझ आया आप लोगों को? Yes, sir. Clear, sir. Okay, great. चलें अब I'm going to give you guys a couple of questions to solve. I want you guys to do number 5, both parts. ठीक है? I want you guys to do number 6, again, both parts. And number 7. 3 questions, ठीक है? इतने लंबे नहीं हैं. सब में आपने 4 terms निकालनी है. और फिर आपने end में coefficient of x cube निकालना है. So I'll give you guys like I think 5 to 7 minutes. Class वैसे हमारी 6:45 तक है, हाँ? 5 to 7 minutes करें इसको. Okay, question number 6 देखते हैं जरा. 1 plus x upon 2 the whole thing to the power 13. Okay. कितनी terms चाहिए हमें? First 4 terms चाहिए, right? So 13 c0 1 to the power 13 x upon 2 to the power 0 13 c1 1 to the power 12 x upon 2 to the power 1 13 c2 1 to the power 11 x upon 2 to the power 2 13 c3 1 to the power 10. कहाँ तक निकालना था? Does anyone remember? First 4 times, so 13 C3. So पहली टर्म आएगी हमारी 1, दूसरी टर्म आएगी हमारी 13/2x, सही, और तीसरी टर्म आएगी हमारी 13c2 divided by 4, so that's 39/2x square. फिर आएगा 13c3 divided by 8, so that's 143/4 x cube. ठीक है, समझ आया? Yes, sir. Thank you. I got it. अच्छा, or do you want me to do the next part also? No, sir. It's fine. Thank you. Okay. चलें, I'll stop here. I will inshallah see you guys on Monday. ठीक है, Monday को हम ये topic खत्म करके we'll do some past paper questions also, and then we'll start a new topic. So yeah, I will stop here. See you guys Monday inshallah. Take care. Thank you, sir. Allah Thank you, Hafiz. sir. Allah Hafiz. Okay.